Hello everyone and welcome to RUPINDER'S online classes and courses. Today's video is specially dedicated to the farmers. Yes, आज की वीडियो farmers को dedicated है. Salute करते हैं हम उनके hard work को, उनकी dedication को and the struggle they had faced and they are facing. So without wasting any more time, let's begin with the video. And in this video, I'm going to discuss some vocabulary words, some idioms and phrases related to the world of farming, including some quotes by the great leaders of the world. So without wasting any more time, let's begin with the same. So the entire video is definitely going to be in 2 of the languages, and you have to stay tuned till end if you are really want to gain something out of this video. And if you're watching the channel for the first time, don't forget to subscribe to the channel and do press this bell icon so that you are notified whenever I upload a video. So I'll begin with this phrase, no farmers, no food, respect them. So these are the topics that we are going to discuss in this video. So here are some great quotes by the great leaders of the world on farmers. So what people have to say about them. So Daniel Webster says, when tillage begins, other arts follow. The farmers, therefore, are the founders of human civilization. So Daniel Webster का ये मानना है कि किसान मनुष्य की सभ्यता के फाउंडर्स हैं, बानी हैं, उसको शुरू करने वाले हैं. क्योंकि जैसे ही खेतों में बुआई का काम शुरू होता है, उसके बाद बाकी सारी कलाएं उसको फॉलो करती हैं. Thomas Jefferson has said, agriculture is our wisest pursuit because it will in the end contribute most to the real wealth, good morals and happiness. So थॉमस जेफरसन का कहना है कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी या कृषि सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता वाला काम है, सबसे ज्यादा सयाना परसूट, सबसे ज्यादा अकलमंदी वाला काम है, क्योंकि अंत में सिर्फ एग्रीकल्चर ही है, सिर्फ खेती बाड़ी या कृषि है जो सही मायनों में देश की सही धन दौलत, अच्छे और ऊंचे आचार, नैतिक मूल्य और खुशी में योगदान देती है. जॉन एफ कैनेडी का कहना है, The farmer is the only man in our economy who buys everything at retail, sells everything at wholesale and pays the freight both ways. So जॉन एफ कैनेडी का मानना है कि केवल एक किसान हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक किसान ऐसा इंसान है जो खरीदता रिटेल पे है और बेचता सब कुछ होलसेल पे है, और दोनों ही तरीकों से चाहे सामान लेके आना हो चाहे देके आना हो, उसी को सारा खर्चा भुगतना पड़ता है. Brenda Scott has said, my grandmother used to say that once in your life, you need a doctor, a lawyer, a policeman, and a preacher. But every day, 3 times a day, you need a farmer. ब्रेंडा स्कॉप ने कहा है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसको कहा था कि जिंदगी में हमें चाहे डॉक्टर की एक बार जरूरत पड़े, लॉयर को हम एक बार ही जिंदगी में मिलें, पुलिसमैन को हम जिंदगी में एक बार मिलें, या किसी प्रचारक को हम जिंदगी में एक बार मिलें, लेकिन हर दिन में 3 बार हमें एक फार्मर को मिलना पड़ता है, हमें एक फार्मर की, एक किसान की जरूरत पड़ती है जब हमने 3 वक्त का खाना खाना होता है. सो ये है बड़े कोट्स, बड़े लोगों ने जो किसानों के बारे में कहा है, जिनको उन्होंने हमारी सभ्यता का आधार माना है. BC Forbes के अकॉर्डिंगली, it is only the farmer who faithfully plants seeds
in the spring, who reaps a harvest in the autumn. तो BC फोर्ब्स का मानना है कि एक किसान ही है जो स्प्रिंग में बीज बोता है और उनको काटता कब है? ऑटम सीजन में, पतझड़ में. बसंत में बीज बो के पतझड़ में उनको काटता है. George Washington has said, agriculture is the most healthful, most useful and the most noble employment of man. तो जॉर्ज वाशिंगटन का ये मानना है कि खेती बाड़ी सबसे ज्यादा सेहतयाब, सेहतमंद, सबसे ज्यादा लाभदायक और सबसे ज्यादा अच्छा, ऊंचे दर्जे का इंसान का एम्प्लॉयमेंट, इंसान का काम, या पंजाबी में कित्ता है. Wendell has said, we have neglected the truth that a farmer is a craftsman of the highest order, a kind of artist. So वेंडल बेरी का मानना है कि हमने हमेशा से ही इस सच को निगलेक्ट किया है, नजरअंदाज किया है कि एक फार्मर ही सही मायनों में एक काश्तकार है और वो भी बहुत अव्वल दर्जे का, अपने आप में एक आर्टिस्ट है, किसान. Henry Allen has said, life on a farm is a school of patience. You can't hurry the crop or make an ox in 2 days. So Henry Allen का कहना है, उनका ये कथन है, उनका ये मानना है कि खेतों में जो लाइफ है वो अपने आप में ही सब्र का स्कूल है. आप कुछ ही दिनों में किसी क्रॉप को उगा नहीं सकते और 2 ही दिन में एक बछड़े को एक ऑक्स नहीं बना सकते. तो अपने आप में ही जो किसान है उसमें पेशेंस, उसमें सब्र आना लाजमी है. और शायद यही रीजन है कि किसान बहुत ही शांतिपूर्वक अपना धरना पिछले कितने ही महीनों से दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे बनाए हुए हैं. So here are going to be, this is the beginning of some of the phrases, idiomatic sentences and idioms based on the farming life. So here begins the vocabulary. Separate the wheat from the chaff. What does it mean? It means to separate the important from what is unimportant. For example, it is important to separate the wheat from the chaff when listening to political speeches. जब हम political speeches को सुनते हैं तो ये जरूरी है कि हमें क्या importantly सुनना है और क्या नहीं सुनना, उसको छांट ले. तो separate the wheat from the chaff का मतलब है unimportant को छोड़ के उसमें से important को choose करना. The next one, you can't make an omelette without breaking eggs. आप बिना अंडे को तोड़े ऑमलेट नहीं बना सकते, जिसका मतलब है you can't succeed without taking some risks or putting some efforts. बिना कोई एफर्ट डाले, अगर मैं यहाँ एफर्ट ही नहीं डालती, इस पीपीटी को नहीं बनाती, शायद मैं आपके सामने इस अपने विचार या इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रख पाती, आपको इन वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ रूबरू नहीं करा पाती. So I had to give some inputs into this. So बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता. For example, expecting good results without working hard is like making an omelette without breaking eggs. तो बिना ऑमलेट, बिना अंडे को तोड़े ऑमलेट नहीं बन सकता. You have to work hard, तभी कुछ जिंदगी में पा सकते हैं हम. Don't count your chicken before they are hatched. अभी अंडे में से चिकन या चूचे निकले भी नहीं है और आप उनको पहले ही काउंट करने लग जाओ. This is doing something very irresponsibly. Don't be so sure about something that is yet to happen. It's unpredictable how many eggs will actually produce chicks. तो कितने अंडों में से कितने चिक्स निकलने वाले हैं ये किसी को नहीं पता, और अगर हम ये एस्टिमेट पहले ही लगा रहे हैं, it means we are acting impractical. Here is the sentence. Leaving your present job in hope of getting a better opportunity is like counting your chicks before they are hatched. So बिना next job मिले पुरानी को छोड़ देना. Excuse me. It's like counting your chicken before they are hatched.
So next idiomatic sentence or an idiom is don't spill the beans. Don't spill the beans. या आप आम भाषा में भी किसी को भी बोल सकते हो don't spill the beans, जिसका मतलब है secret leak ना करो. Don't reveal a secret. Example, Rohan spilled the beans by sharing the confidential information of his company with his rival. तो रोहन ने ऑटोमेटिकली ही अपनी कंपनी का सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को देके राइवल को एनिमी को या जो अपोजिट पार्टी है उसको अपना सीक्रेट इंफॉर्मेशन देके क्या कर दिया, बीन्स को स्पिल कर दिया, सीक्रेट को लीक कर दिया. नेक्स्ट इज टू मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स. बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो. टू मेक hay while the sun shines. It means to grab the opportunity at the right moment. We decided to make hay while the sun shines and invested our money in immovable property. तो हमने बहती गंगा में हाथ धो लिया क्या करके, हमने जल्दी से अपने पैसे को मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको आप इधर उधर लेके जा सकते हो, जैसे गोल्ड है, दैट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल मीन्स लैंड, आप उसको कंधे पे उठा के कहीं और नहीं लेके जा सकते, सो दैट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. Don't put all your eggs in one basket. That's another idiomatic sentence, or you can use it as an idiom. Don't put all your eggs in one basket. अपने सारे के सारे eggs को एक ही basket में मत रखिए, जिसका मतलब है कि अगर एक ही झटका लगा तो सारे के सारे जाएंगे. अक्सर ये वाला idiom हम investments के लिए यूज करते हैं. Don't make everything dependent on one thing. You might lose everything in one go. For example, my suggestion to you is to diversify your investments and not to put all your eggs in one basket, just in case the share market crashes again. So सारा कुछ ही खो देंगे हम जितना कुछ पाया है. So it's very important not to put all the eggs in one basket, not to invest everything in just one particular venture. And even it is very important, I have just read it somewhere, Elon Musk was suggesting all the investors that one should never ever invest the hard-earned money, the whole of the savings of one's life into share market. It can crash anytime, so one should invest wisely. So I should stop preaching and let's come to the next vocabulary word or idiomatic sentences. The next one is get or have all your ducks in a row. That means to be organized and prepared. This means to be well organized and prepared for the upcoming events. For example, maintaining your homework copies for the checking is like getting or having all your ducks in a row. So the next idiomatic sentence is to reap what you sow. We usually say you are going to reap what you are sowing, which means jaisa boge waisa hi katoge. Every action comes with a reaction. What you do comes back to you one way or the other. हम जैसा करते हैं कायनात भी हमारे साथ वैसा ही करती है, चाहे आज चाहे कल. For example, she has always been so rude to her employees. I hope she will reap what she has sowed one day, or she has sown one day. जो उसने बोया है वो एक दिन जरूर काटेगी, क्योंकि she has always been very rude, or you can say insulting towards her employees. To take the bull by the horn. Don't take the bull by the horn. This is generally जब हमने किसी को कहना है कि ज़्यादा पंगे मत लो. So this means to be fearless and confront hard times boldly. तो बहुत fearless निडर होके act करना और confront करना बुरे times को, उसके लिए हम इस idiom को use करते हैं. For example, the CEO took the bull by the horns and fired entire corrupt members of the management
entire corrupt. This is wrong here. I should have asked you later on in the comment section that what is the mistake here, but let it be. I would let you know right away now only. So the CEO took the bull by the horns and fired here either the entire team or fired the corrupt members. Either entire team, you have to need to add team here. Entire team or the corrupt members of the management and replaced them with the new talented individuals. To kill the goose that lays the golden egg. सोने के अंडे को देने वाली मुर्गी को मारना. बहुत पुरानी, बचपन से सुनते आए हैं हम ये स्टोरी और ये वाला फ्रेज, idiomatic sentence, don't kill the goose that lays the golden egg. तो जिसका मतलब क्या है? To end a valuable source of income. आमदन के valuable source को खत्म करने को कहते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना. आम यूज करते हैं हम. और कहां से आया है? ये फार्मिंग से रिलेटेड वर्ड से ही आया है. Example, he cannot afford to annoy his wife because it's like killing the goose that lays golden eggs. वो अपनी वाइफ को बिल्कुल गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार रहा है या उसको अपने से गुस्सा करा रहा है. You can bet the farm. इसका मतलब है you can bet the farm when you can be certain of something or someone. शर्त लगा लो. I'll accomplish my final project for this semester on time. You can bet the farm on it. आप इसके ऊपर शर्त लगा लो, फार्म की शर्त लगा लो, मैं इस सेमेस्टर का अपना फाइनल प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा करूंगा. To farm out. Farm out का मतलब है to assign the work to somebody else. किसी और को बाहर दे देना. अगर मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय को काम दिया, उससे नहीं हुआ और मैंने किसी और को काम वो दे दिया, that means I am farming out the task. For example, the problematic nature of the employees compelled him to farm out the task. This is not visible here, so यही लिखा हुआ है यहाँ पे. The last straw. The last of a series of events that lead a person to lose his or her patience. आखिरी, ऐसा एक आखिरी इवेंट जो आपको या आपका सब्र का बांध तोड़ देगा या आपको पागल कर देगा, कोई ऐसा इवेंट, दैट इज कॉल्ड द लास्ट स्ट्रॉ. बस इसी की कमी थी, उसको कहेंगे लास्ट स्ट्रॉ. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सिंक ब्रोक and the air conditioning stopped working, my landlord told me he was going to raise the rent. That was the last straw. I started to look for a new apartment right away. सिंक टूट गया, एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा, मतलब एयर कंडीशन खराब हो गया, एसी खराब हो गया और ऊपर से मेरा मकान मालिक अगर मुझे कह रहा है कि वो रेंट बढ़ाने वाला है, वो किराया बढ़ाने वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये ऊंट की पीठ पे पड़ने वाला लास्ट दिन का है. द लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक, ये फुल फ्लेजेड पूरा फ्रेज है. सो साथ के साथ ही मैंने क्या किया, इतना कुछ देख के ये काफी था, ये आखिरी इवेंट था, इसके बाद मैंने डिसीजन लेना था और वो डिसीजन था आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट. स्प्रिंग चिकन. स्प्रिंग चिकन का मतलब है यंग पर्सन. माई ग्रैंडमदर लाइक्स टू tell me that she is not a spring chicken anymore whenever I ask her to come for a walk with me. जब भी मैं अपनी दादी माँ को ये कहती हूँ कि मेरे साथ वॉक पे चलो, तो वो अक्सर मुझे याद दिलाते हैं that she is not a spring chicken anymore. अब 85 या 90 की एज में जाके वो मेरे साथ वॉक पे कंफर्टेबली मेरे साथ मेरी स्पीड पे नहीं चल सकती. She is no more a spring chicken. With all
love and blessings for all the grandmothers in the world. They should be, they are our backbone, and they should always be very cheerful and happy. Until the cows come home. This means for a very long time. Example, we should discuss this problem until the cows come home. कि जब तक cows लौट के नहीं आती. Usually मतलब क्या होता है, जब सुबह cows को हम भेज देते हैं चरने के लिए, the way you can see it in the picture, तो they take time, cows take time. तो अक्सर ये phrase ऐसे यूज होता है कि जब तक गायें भैंसें चर के वापस आ रही हैं तब तक डिस्कस कर लेते हैं. But it won't solve anything if you do not take some action. कि बहुत लंबा समय है. We should discuss this problem until the cows come home. जब तक cows वापस नहीं आ जाती, इसको discuss कर लो. But we should act immediately. Otherwise, it's wastage of time discussing on the matter. I'm so hungry. I could eat a horse. जब भी कोई ये कहे I could eat a horse, इसका मतलब है that person is extremely hungry. After Danish finished running the race, he told me that he was so hungry he could eat a horse. इतनी भूख लगी थी कि घोड़ा भी चबा जाए. वो चने की तरह, चने नहीं, चने के साथ साथ घोड़ा भी चबा जाए. इतनी भूख लगी है, तब हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं. So here are some more words. First is the phrase quit being a chicken. हम usually इस phrase को use करते हैं chicken hearted. He's chicken hearted. चिड़ी जितना दिल है उसका. तो quit being a chicken का मतलब stop being needlessly fearful. बिना बात के डरने की कोई जरूरत नहीं है. Example, just do what he wants you to do. जो वो चाहता है वो करना without expressing your doubts about it, and quit being a chicken. So just do what he wants you to do without expressing your doubts about it. यहाँ क्या missing है आप? It's like that you are catering to his needs and you should stop. You should quit being a chicken. डरना बंद करो, चिकन बनना बंद करो. एक चिकन की तरह, चिड़ी के दिल की तरह मतलब रिएक्ट करो कि आप डर रहे हो किसी चीज के सामने. So stop being needlessly fearful. डरने की कोई जरूरत नहीं है. अपने डाउट्स को बिना एक्सप्रेस किए नहीं रहना. डाउट्स को एक्सप्रेस करो एंड स्टॉप. क्विट मीन्स स्टॉप, बंद करो. क्विट बीइंग अ चिकन, नहीं करना, क्विट कर दो ये काम और ज्यादा आपने चिकन नहीं बनना. ब्रिंग होम द बैकन. It means earn an income and support your family. The farmers are the breadwinners. The farmers are the breadwinners and they bring home the bacon. कौन कमाता है, कौन लेके आता है हमारे लिए खाना, कौन उगाता है? They are the farmers. Beef up. It means strengthen up yourself. अपने आप को बहुत ताकतवर बनाओ, डरो नहीं. Example, beef up my son, you are a warrior. Usually मदर्स अपने बच्चों को यही कह के इनकरेज करती हैं कि आप तो एक वॉरियर हो, आप डरने वाले नहीं हो, आप रुक नहीं सकते, आप थक नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना है. तो हर मदर शायद अपने बेटे को, अपनी बेटी को ये कहती होंगी, beef up my son, beef up my girl, you are a warrior. And that's So here are some other words, and the way I was just discussing on the previous slide, that's that warriorship, that never dying spirit of someone can help somebody to beat even the pandemic like COVID-19. So agriculture का मतलब farming, खेती बाड़ी. These are the words, and on this side, on the other side, there would be on this side you will find certain words, and on this side the meanings will be written one by one. Farms का मतलब, agriculture का मतलब farming, farms का मतलब fields या खेत. farmer को और क्या कह सकते हैं हम, ये IELTS वालों के लिए बहुत helpful रहेगा. Peasants और agriculturist, that is the word that can be used for farmer. Produce या production, पैदावार,
को क्या कहते हैं? यील्ड। इसका मतलब ये है पैदावार या झाड़। जैसे हम कहते हैं कि क्रॉप्स का झाड़ कितना हुआ है, कितने हेक्टेयर में कितनी वीट उगी है और इस बार कितनी बढ़ी या उससे कम हुई है। Weeds. Weeds are the unwanted plants that grow with the crops. तो खेतों में फसल के साथ उगने वाले अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए, ऐसे प्लांट्स को वीड्स कहते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अक्सर वीडीसाइड्स को यूज किया जाता है। इरिगेशन, जब हम अपने पौधों को पानी देते हैं, वी वाटर द प्लांट्स। बट जब किसान खेतों में खड़े इतने ज्यादा सारे हजारों पौधों को पानी देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंचाई, राइट? इरिगेशन। वाटरिंग द क्रॉप्स, वाटरिंग द प्लांट्स, और अगर आप क्रॉप्स को पानी दे रहे हो तो उसको कहते हैं इरिगेशन। फॉडर, फॉडर क्या है? फॉडर मीन्स food for the cattle. The cattle is a collective noun for cows and buffaloes, all the milk giving animals. So the cattle, तो cattle का food, गायें भैंसों का चारा, is called fodder. So this is all about this presentation, this video lecture, and I would like to take a pledge with you all today. Let's promise each one of us today that we are going to respect the farmers. We are going to help the persons in need the way our farmers are selflessly doing. They're selflessly serving the world. Be it a pandemic, be it a cyclone, be it an earthquake. Farmers, in one way or the other, are always there. Be it some NGO who's carrying the food. But keep in mind, we cannot grow the food on our rooftops. We cannot grow it in our pots. It is grown in the fields and taken care of by the farmers. So, with this, once again, with an appeal, a big salute to the farmers. Jai Jawan, Jai Kisan. And if you are watching this video for the first time, don't forget to subscribe to the channel. And these are the different platforms which are going to get displayed on screen on which I'm available. On YouTube, this is my channel. On Facebook, I have a page as RUPINDER'S Online Classes. And I'm on Instagram, but to be very honest, I'm not very, you can say, expert like the young people of today, the way they are using everything, all the social media platforms. But with the promise that whenever I will confront you, whenever I will come in front of you, definitely I am going to enrich your vocabulary. I'm going to add up in your existing knowledge. With this promise, I'm taking leave of you. Stay safe, stay healthy, and thank you very much for watching the video today. Thank you.